welcome to the class and the regular ones. आपको तो पता ही है कितना मजा आता है. So let's start on. Let's talk about the brain. And you know what? Right now हम शुरू कर रहे हैं with some puns. So काफी light होने वाला है ये session. It's not gonna be like a hardcore theory वाला class. ऐसा नहीं है. So brain के बारे में some really छोटे से jokes हैं यहाँ पर, as you can see. So normal brain जो है ना, normal brain basically problems आती हैं और आपका जो brain है by processing and analysis करके it finds a solution, है ना. So all that work is done by your brain only. लेकिन जो हमारा brain होता है, problems आती हैं and you start cracking jokes. है कोई class में यहाँ पर? Anyone in the class here? Do let me know. अगर कोई प्रॉब्लम आती है, you are always in a joking वाला mood and आपकी problems की वजह से you turn it into a joke here. Anyone in the class who does that? Yeah, at the end आपसे problem solve तो हो नहीं रहा है and you are literally in tears, but then you're just joking around, joking about that. That is also a job of your brain only. जो आप jokes वगैरह बनाते हो ना, वो भी brain से ही आते हैं. So yes, हमारा cute little organ जो है brain, it is doing everything. सब काम करता है ये. Check that out. So yes. So हमारा brain इस तरह से function कर रहा है. जो Einstein वाला types का brain होगा, they find a solution. But हमारा जो brain है, of course we just joke around. Moving forward, शुरू करते हैं. Without the nervous system, so I just started with a question only. Let me see how many of you know about it. So without your nervous system, आपकी अगर nervous system नहीं होता, you couldn't walk, breathe, think, या all of these. So without the nervous system, guys, ये चारों में से कौन सी चीज आप नहीं कर सकते? A very easy start. I'm pretty sure you guys all know about the correct answer. Starting in 3, 2, and 1. जल्दी से बताइए, what do you think? So without your brain, without your spinal cord, without your nerves, आपकी सारी की सारी nerves आती हैं, brain आता है, spinal cord आता है. So basically all these functions that your body does is actually controlled by your brain only. ठीक है, आप वॉक करते हो बिकॉज ऑफ देयर नर्वस सिस्टम. आप ब्रीदिंग कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ योर ब्रेन ओनली. देन थिंकिंग तो ऑफकोर्स ब्रेन करता ही है. ठीक है गाइज, सबको समझ आया यहाँ तक? We'll be talking about all the parts of the brain today, but ये बात सबको क्लियर हो गई है? All those who had answered incorrectly also, समझ आ गया? So everything that your body does is under the control of your brain. Brain is like the brain of your body, right? Control center of your body. चलो बढ़िया, आगे चलते हैं. Let's talk about your nervous system first of all. ज़्यादा मतलब we are not going to go into much detail. हम सिर्फ brain पर concentrate करेंगे. But yes, your entire nervous system is actually divided into two categories. The central nervous system, CNS, and the peripheral nervous system. That is your PNS. Your brain and your spinal cord. ये जो green color का, yellow color का आपको चीज दिख रहा है या in the GIF? The centermost आपका brain and the spinal cord. That is basically your central nervous system, and all the nerves which are arising from your brain or your spinal cord, they come under the peripheral nervous system. तो आपकी body में जितनी भी nerves हैं, right? We'll be talking about nerves in just a bit, but all the nerves are basically arising from your brain or the spinal cord. Okay? So all of them together, the nerves, brain, and the spinal cord together, they come under the nervous system. Okay? Taking you to the next question. The nervous system is made up of these 3 parts. So कौन सी 3 parts बने together make your nervous system? Let me see. Your brain, heart, and your spinal cord. Your brain, spinal cord, and the nerves. Your nerves, arteries, and the veins. Your nerves, liver, and your heart. Got the question? So कौन सी 3 चीजें इकट्ठे मिलकर they make your nervous system? And I'm starting in 3, 2, and 1. जल्दी से बताइए. Come on. हमने अभी पढ़ा था. In the last slide, I had told you about it. So which are the 3 things which together make your nervous system? All right. Well, the majority have answered correctly, but still मुझे काफी गड़बड़ answers मिल रहे हैं. But चलो, come on. Read all the options properly and then mark.
Nice. And that is our fastest finger list. Well done, guys. सही, बहुत बढ़िया. So yes, it's your B. Come on. Heart कैसे आप अपने nervous system में ला सकते हो? Inside your body, your heart and these blood vessels, they are a part of circulatory system. याद है heart वाला आपने life process कर रखा है. So this is wrong, and your liver and heart again wrong. So this is absolutely correct. बहुत बढ़िया. Now let's focus on the brain right now, the central nervous system. So brain तो सबको पता है, that's there in your head. What is a spinal cord? Spinal cord पता है क्या होता है? Spinal cord is basically a bunch or a bundle of nerves which are actually passing through your vertebral column. आपको पता है आपकी बॉडी में the vertebrae that we have, the 33 vertebrae जो backbone कहते हैं जिसको, so हमारी बॉडी में we have these 33 vertebral column, and उन सभी vertebral column के बीच में से a hole is present. ठीक है, there is a hole present in all your 33 vertebrae, the backbone. और उन सब के बीच में से, उन होल्स के बीच में से these nerves, bundle of nerves is passing, and that is called the spinal cord. So basically जो हमारी spinal cord है, it is protected by your backbone. सबको समझ आया? ब्रेन तो यस आपके हेड के अंदर है, बट इनसाइड, फ्रॉम इनसाइड योर बैकबोन एक पतली सी कॉर्ड जा रही है, विच इज नथिंग बट अ बंडल ऑफ नर्व्स. दैट इज कॉल्ड द स्पाइनल कॉर्ड. सबको समझ आया व्हाट अ स्पाइनल कॉर्ड इज बच्चा? So your brain as well as the spinal cord, both of them are actually made up of your nerve cells only. आपका पूरा का पूरा जो ब्रेन होता है, which is like in a shape of a walnut, अखरोट की जैसा होता है ना वो, so it is made up of nerves only, the nerve cells. So is the case of your spinal cord also. बच्चे लोग अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, you are unable to understand, please go ahead and ask our class teachers. So we have our class teacher with us, और वो आपको हेल्प कर देंगे. ठीक है, moving forward. So yes, we have 33 vertebrae, 33 in total, and right from within the vertebral column, this spinal cord is passing. तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे tailbone. So बिल्कुल लास्ट वाला जो 33rd vertebra है, and this is your first vertebral column. Moving forward, आगे चलते हैं. The combination of nerves that runs through the backbone. तो आपकी backbone के अंदर the nerves, उसको क्या बोलते हैं? Spinal cord, veins, muscles or the vessels. Understood the question? Backbone के अंदर से जो nerves जा रही हैं. Starting in 3, 2 and 1. Go for it, guys. जल्दी से मार्क करके बता दो. We have just talked about this. All right, well done. Super. Come on, jaldi se. We still have 15 more seconds to go, but I'm waiting for 100% response. हमने अभी बात करा था. Lovely. Last 5 seconds. Super. So again, that's the fastest finger list, and yes, I can see some new names up on our fastest finger list. Well done, guys. ये बहुत बढ़िया था. So everyone has understood. I'm super happy. So it is your spinal cord. बार I could see a lot many of you are marking veins. बच्चे veins क्या होती हैं? The blood vessels, जिसके अंदर blood is flowing. So it is a part of circulatory system, not your nervous system. Nervous system is made up of your spinal cord, brain and all the nerves arising from them. ठीक है, एक और छोटी सी चीज. The backbone that we have now, it's a bony structure. अभी feel करके देखो, you will feel some very hard bones which are there. Now this bony vertebral column is actually protecting your spinal cord. ठीक है, so ये आपका जो backbone होता है, backbone protects the spinal cord. ठीक है बच्चे, moving forward to the next one. Which part of the body is the control center of the nervous system? तो आपका पूरा nervous system किस चीज के control में है? Spinal cord is the control center, stomach,
brain or the heart? Come on, ये सबसे easy question है. Give me 100% correct response starting in 3, 2 and 1. Go for it. So जल्दी से बताइए. Your entire nervous system is under the control of. Lovely. बहुत बढ़िया. That's nice. और जो बच्चे आंसर गलत कर रहे हैं, I'm assuming आपसे misclick हो रहा है. Because this is such an easy question. That's the fastest finger list again. Well done. Yes, it is C. Absolutely correct. Brain is the control center of your body. सारी चीजें, whatever is going on in your body, your respiration, your heartbeat, your movement, everything is under the control of the brain. ठीक है बच्चे, now we're starting with the structure of a brain, but let me right now very quickly show you your zonal leaderboard. Let's check that out. So, अच्छा leaderboard तो हो गया था, sorry. हाँ, अच्छा आज है ही नहीं. Okay, never mind. Moving forward, guys, to the structure of your brain. अभी हमने सिर्फ we are concentrating on your brain only, and I'll be telling you 10 amazing facts here. So brain is the part of your central nervous system, which is the control and coordination center of your body. आपकी brain के अंदर बहुत सारी जगहें हैं, बहुत सारी अलग-अलग places which are there. We'll talk about just that in just a bit. But yes, the entire structure, doesn't it resemble a walnut? वॉलनट क्या होता है? अखरोट. अगर आपने अखरोट को खोल के कभी इसका अंदर वाला पार्ट देखा है, इट हैज दीज बहुत सारी ऐसी सुपर कॉइलिंग हो रखी है. सो दिस इज व्हाट आवर ब्रेन इज. ठीक है, एंड इट हैज डिफरेंट लोब्स. वील टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ डिफरेंट लोब्स इन जस्ट अ बिट. बट यस, ऐसा दिखता है हमारा ब्रेन. ठीक है, ओके. फैक्ट नंबर 1, आपके ब्रेन का सबसे पहला फैक्ट. द ह्यूमन ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द क्रेनियम, which is nothing but your skull. And इसमें टोटल 22 bones होती हैं, which are completely fused. ठीक है, so your entire this thing, जो आपका cranium हो गया, जो skull हो गया, that has 22 fused bones. So there is no joint present. ये पूरा का पूरा एक bone नहीं है. It is actually 22 bones which are completely fused, and it is protecting our this walnut shaped brain inside. सबको समझ आ गया? सबसे पहला फैक्ट है बच्चे लोग. एवरीबडी, आई एम प्रीटी श्योर सबको पता ही है ये ऑलरेडी. सो योर स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय योर बैकबोन एंड योर एंटायर ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द क्रेनियम. ठीक है बच्चे? ऑलराइट, सुपर. आगे चलते हैं टू द फैक्ट नंबर 2. अब ये जो ब्रेन मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर दिखाया, दिस वन, इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ द नर्व्स ओनली. ठीक है, so your brain, it contains approximately 100 billion neurons. Can you beat that? Our entire body has around 50 trillion cells, और उसमें से 100 billion nerve cells are present in your brain alone. तो आपको I'm pretty sure you guys have heard of it already. जितने हमारे stars दिखते हैं हमें, उससे भी ज्यादा we have the neurons, the nerve cells present inside your brain of one individual. एक person के brain के अंदर इतने सारे. Can you beat? And yes, the nervous tissue, which are made up of the neurons which conduct the stimulus across the body. So it is this nerve cell. I'm pretty sure nerve cell तो सबको पता ही है. So आपके dendrite हो गए, cell body हो गया, and that is your axon. So one nerve cell ये है. Inside your entire brain we have 100 billion nerve cells. Right guys, आगे चलते हैं to the next one. The functional unit of the brain. So basically brain is made up of which of the following structures? Nephron का बना है, epidermal cells का बना है, neuron or the cardiac cells. So what is actually making your brain? Starting in 3, 2 and 1. Come on, jaldi. Last 15 seconds.
Okay, 3 more seconds, guys. And the time is up. The answer is the nerve cell, the neuron. Nice. Good job. And some new names up on our leaderboard. Well done, guys. ये रहा हमारा आंसर. न्यूरॉन इज योर नर्व सेल. आपका पूरा का पूरा ब्रेन बना होता है नर्व सेल्स का. ठीक है. ऑलराइट, आगे चलते हैं. अबाउट हाउ मेनी न्यूरॉन्स डज द ब्रेन कंटेन. अभी आपसे पूछा था, आपको बताया था मैंने. सो हाउ मेनी न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन योर ब्रेन? 10,000, 100 million, 100 billion, or 100 trillion? Starting in 3, 2, 1. Go for it. And I've just given you 15 seconds for this because ये बहुत easy question है. कितने नर्व सेल्स आपके ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है बच्चे? All right. So good job, well done, guys. So brain basically is present in all of us. लेकिन कितना ब्रेन आप यूज कर रहे हो, कितना दिमाग आप लगा के अपने आंसर्स फाइंड कर रहे हो, दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल. सो यस, वेल डन. इट इज 100 बिलियन. इतने सारे नर्व सेल्स हैं आपके ब्रेन के अंदर. Okay, coming to the fact number 3 right now. The largest part of the human brain is the cerebrum. तो सबसे बड़ा पार्ट आपके ब्रेन का is the cerebrum. So first of all, let me tell you how the structure of your brain. So your brain is actually divided into 3 parts. आपका पूरा का पूरा brain. The first part is the forebrain, the midbrain, and the hindbrain. Can you see this? 4 का मतलब ऊपर वाला. So ये पूरा का पूरा portion जो आपका brain का है, that is the forebrain, and it comprises of cerebrum, hypothalamus, thalamus. But yes, the cerebrum is the largest part of your entire brain. Then इस पूरा का पूरा cerebrum के नीचे वाली तरफ is the present this midbrain. ये वाला region आपका midbrain है. Midbrain is just connecting your forebrain to your hindbrain. And the lowermost region, ये जो पर्पल कलर का आपको दिख रहा है, that is your hindbrain का part, which is cerebellum. ठीक है. तो आपका पूरा ब्रेन इज लाइक दिस. सो यू डोंट हैव टू इमेजिन इट लाइक फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. ऐसा नहीं है. इट्स लाइक दिस इज योर ब्रेन. द इंटायर बाहर वाला पार्ट जो हो गया, ऊपर भी और पीछे वाली तरफ भी, दैट्स योर सेरिब्रम. उसके बिल्कुल नीचे इज द मिड ब्रेन एंड सबसे नीचे इज द हाइंड ब्रेन. ठीक है गाइस, सबको समझ आया दिस वन? The largest part of your brain is the cerebrum part. और cerebrum में बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अभी बताने वाली हूँ आपको. All right. Moving forward. Now, next part. The brain, the fact number 4 that I'm giving you, the brain is suspended in the cerebrospinal fluid. It's actually called the CSF. So basically, this outermost part, आपको दिख रहा होगा, this entire thing is your skull. That's your cranium, the bony part. Cranium को हम brain box भी कहते हैं. So it's a very hard part protecting your inside organ, brain. ये आपका brain है. Now बच्चे लोग, आपके skull और brain के बीच में, you see that gray color का portion? ये पूरा का पूरा area यहाँ पर is filled with the CSF, that's your cerebrospinal fluid. And ये जो fluid होता है ना, it is actually a shock absorber and it provides cushioning to your organ, to your brain basically. So बहुत important function है CSF का, right? To our next fact number 5 right now. The brain of an adult human weighs around 1.5 kgs. तो आपकी पूरी बॉडी में suppose you are weighing like 50 kgs, उसमें से 1.5 kg is actually your brain. ठीक है? And although it makes up to just 2% of the body's weight, but it uses maximum amount of energy. 20% of the energy of your body is used by the brain itself. तो जब आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद एनर्जी बनती है और वो एनर्जी में से 20% is used by the brain because it is control center, isn't it? वो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है. So it requires a lot of energy. सबको समझ आया बच्चे? मजा आ रहा है सबको? This is your 5th fact that I have just told you. तो आज हमें इतनी इंटरेस्टिंग बातें पता चल रही हैं about your brain, and I'm pretty sure by the end of this session you will be like, अपने ब्रेन के बारे में आपको बहुत सारी चीजें पता होने वाली हैं.
Chalo, nice. To our next question. The weight of the brain is approximately कितना? अभी बताया 4 to 5 kgs, 3 to 4 kgs, 2 to 3 kgs या 1 to 2 kgs. बहुत easy question. I've just told you the answer. Starting in 3, 2 and 1. Go for it. Only 15 seconds का timer for this. जल्दी से बताओ guys. Last 5 seconds. A very easy question. कितना होता है हमारे ब्रेन का वेट? All right, lovely. It is 1.5 kg. So yes, 1 to 2 के बीच में. Great guys, great. All right. आगे चलते हैं to the fact number 6. I'm so sorry. 6 right now. The brain cannot feel pain. Do you know that? आपका ब्रेन पेन नहीं फील करता. Do you see this GIF right now? ये जो वीडियो छोटा सा चल रहा है. So यहाँ पर what is happening? यहाँ बीच में एक बोर्ड रख दिया है. And the real hand of this person is actually this. ये सिर्फ एक a demo, एक dummy hand है, you can say. ठीक है? And now there's this person who is एक brush से उसको वो कर रहा है, caress कर रहा है. And now, as you can see in the GIF here, the moment this person brings a fork next to the fake hand, this one is the fake hand. लेकिन this person is going to react because उसको लगता है कि उसका real hand पे लगने वाला है. Okay, so this is how your brain is actually working. Your brain does not feel any pain. It just interprets the pain signal sent to it. So suppose करो एक needle है. Needle आपको एकदम से यहाँ पे pointy end उसका लग गया. What's going to happen? Now all the nerves which are present here, all the receptors which are present here is going to pick up that signal. It will transmit the signal to your brain and जो brain है उसको analyze करेगा, process करेगा और उसके बाद आपको वो pain feel होने वाला है. ठीक है? So the brain itself can't feel the pain. It is the signal that is brought by the nerves from the outside. तभी वो बता पाएगा that it's paining or not. This part is clear to you guys? This is all your neurosciences का part. So psychology है ये सारा का सारा. And you know what? Psychology is such an amazing field. Anyone who takes up medical in 11th and 12th, yes, of course, you guys have a huge option for going for psychology as well. Yeah, so neurosciences में भी जा सकते हो. Fact number 7, your brain uses 20% of the oxygen. अच्छा, have you ever felt headache? मतलब, have you ever कभी आपको headache वगैरह हुआ हो? है ना, real में, of course, everyone has it. One day or the other, headache तो हुआ ही होगा. Now that headache is actually because of less oxygen in your body. Because the oxygen that you inhale in goes into the blood and जो blood है वो उसको brain में लेकर जाता है. If the oxygen supply to the brain is less, then of course बहुत problems हो सकती हैं. You start having a headache, आपको नींद आ जाएगी and all those things. ठीक है? So oxygen is very important because बहुत सारा energy brain को चाहिए and energy comes from the oxygen only. So yes, that is our fact number 7. Fact number 8 पर चलते हैं. It is a myth. Guys, ये मैं आपका myth buster कर रही हूँ right now. It is a myth that humans only use 10% of our brain. ऐसा नहीं है. सुन रखा होगा आपने, right? So we actually use all of it. हम पूरा का पूरा brain use करते हैं because this entire brain that we have, different regions have different areas of association. We'll talk about that in just a bit, but you need to remember we are actually using our entire brain here. ठीक है? We are even using more than 10% of the brain when we sleep. जब आप सो रहे होते हो तब भी आपका brain is working. Is this myth सबका clear हो गया? पहले तो ये बताओ. It's actually a myth. Don't ever believe that. ऐसा नहीं है. We are using each and every part of your brain because different regions of the brain is associated with different function. ठीक है? Memory के लिए एक जगह है, thinking के लिए there is another place, then vision के लिए there is this another lobe that is. Okay, doubts आ रहे हैं यहाँ पे बहुत बच्चे को. बच्चे लोग please go ahead and ask our class teachers, get your doubts cleared. So ये एक myth है बहुत बड़ा. Let me see. समझ आया है? We only use 10% of the brain. Is this statement true or false? I've just told you about this, but एक hotspot में कर लेते हैं. A or B? True or false, guys?
I just told you about it. And यहाँ पे look at the response that I'm getting. We only use 10% of the brain. Is this statement true or false? Come on, come on, come on. Still waiting for 100% bacha to respond here. Chalo. Wow, what are the odds? And yes, 50% of the kids are wrong in the class. The answer is false, guys. Kya ho gaya? This is a myth. Please, you all are science student, you all are biology students. इसको नहीं follow करना. ये गलत चीज है. This is the brain function. Do you see your entire brain? So your entire cerebrum जो हो गया ना, it is actually divided into lobes, different lobes. This is your frontal lobe, जो red color का आपको दिख रहा है. ये पूरा का पूरा area जो है, that is your frontal lobe. And thinking, speaking, reasoning, problem solving, all these different parts are basically concentrated here. ठीक है, इस रीजन का पार्ट है, ये इस रीजन का फंक्शन है. देन द येलो पार्ट इज योर पेरिटल लोब विच इज इन्वॉल्व्ड इन रीडिंग, बॉडी ओरिएंटेशन, सेंसरी इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेजेस. तो इसके लिए पेरिटल लोब है पीछे वाला. देन देयर इज थिंग कॉल्ड टेम्पोरल लोब. टेम्पोरल लोब इज बेसिकली ऑरेंज इन कलर जो आपको दिख रहा है. It's not that it is your brain is colorful. No, it is just gray matter and white matter, but just यहाँ पर दिखाने के लिए it is colored. So memories are basically stored here. Then we have hearing, behavior, generating emotions. ये सारी चीजें temporal lobe का part है. ठीक है? There is a part called amygdala. एमिगडला एरिया का नाम है इनसाइड योर ब्रेन, एक पार्ट का नाम है विच इज एक्चुअली एसोसिएटेड विद इमोशंस. ठीक है. अच्छा, बिफोर आई गो हेड, हैव यू सीन द मूवी इनसाइड आउट? देखिए क्या बच्चा, यस और नो, लेट मी नो. इनसाइड आउट, दिस इज लाइक ए एनिमेटेड मूवी है डिज्नी की. इफ यू हैव सीन दैट मूवी, डू लेट मी नो. इनसाइड आउट, इट्स ऑल अबाउट इमोशंस. वो ब्रेन के अंदर डिफरेंट इमोशंस के बारे में है. एंड इट्स सच अ ब्रिलियंट मूवी गाइज. You've got to watch it. ये एक animated movie है basically. ठीक है? So if you guys are a fan of animation, and it's a Disney movie, so do go watch it. A beautiful movie, and you will understand a lot many things. So basically, brain को समझाया हुआ है in like a very easy way. Such an emotional movie as well. So as I can see, बहुत सारे बच्चों ने देखी है, and all those who have not, guys, the movie जरूर देखना. ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड नाउ, पीछे राइट बिहाइंड हियर यहां पर एक लोब है विच इज कॉल्ड ऑसिपिटल लोब, एंड दिस इज बेसिकली उसका फंक्शन है विजन का. सो ऑल द नर्व्स दैट कम आउट फ्रॉम योर आईज, राइट, आपकी जो ऑप्टिक नर्व्स हो गई, दे गो टू दिस ऑसिपिटल लोब. So as you can see, the entire region of your brain is associated with a different function. We are using बच्चा बहुत सारा part, is not just the 10% of your brain. Then this part, the purple color region, is your cerebellum. Cerebellum is basically for the posture of your body. When you are walking, ऐसा तो नहीं आपके हाथ इधर जा रहे हैं, आपके पैर इधर जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता. You are walking in a well coordinated way. Also, the hand-eye coordination. You know about this? Hand-eye coordination आप समझते हो? मतलब एक बॉल आ रहा है and you are able to gauge it, और आपने उसको कैच कर लिया बहुत आराम से, है ना. आपने उसका डिस्टेंस मेजर करा, यू नो कि ओके यहीं पर बॉल आ रही है, यू प्लेस योर हैंड्स एट अ प्रॉपर एंगल, योर हैंड आई कोऑर्डिनेशन. सो दिस इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ सेरिबेलम. ठीक है बच्चे. एंड देयर इज अनदर पार्ट कॉल्ड मेडुला ऑब्लोंगाटा इन योर ब्रेन. मेडुला ऑब्लोंगाटा बेसिकली यहाँ पे प्रेजेंट है, ब्रेन स्टेम का पार्ट है. इट कंट्रोल्स ऑल द इनवॉलंटरी एक्टिविटीज हैपनिंग. ऑब्लोंगाटा, जितने भी इनवॉलंटरी मूवमेंट होती है ना, लाइक योर हार्ट बीट, योर रेस्पिरेशन, सब कुछ इज अंडर द कंट्रोल ऑफ योर मेडुला. सबको समझ आया? लेट मी नो इन द पोल गाइस. बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. योर एंटायर ब्रेन रिसर्च इज स्टिल गोइंग ऑन. वैसे बहुत सारी चीजें अभी भी स्टिल हैव नो आइडिया हाउ दे आर फंक्शनिंग, बट यस, we at least know the structure of the brain and the different areas of association related to each part. Super. Okay, taking you to the next quiz. So we are almost towards the end of the session. हमारे I think 2 facts और रह गए हैं, जल्दी से करते हैं. Which part of the brain helps keep your balance so you don't fall flat on your face?
तो जब आप चलते हो walking, so what exactly is the part of the brain that keeps your balance? Is it the cerebellum, medulla oblongata, pituitary gland, or the spinal cord? तो अभी बताया था guys, starting in 3, 2 and 1. जल्दी से मार्क करके बताओ. And you know what? जो alcoholics होते हैं ना, people who are like high on alcohol, they are not able to walk straight. आपने देखा होगा, वो straight line में चल ही नहीं सकते. They are completely high. So I'll tell you which part of the brain is actually affected. All right. Very well, guys. The answer to this is given by all these students here. So that's our fastest finger list. But I was expecting more, but yes, all those who got this right, well done. I am so sorry. यहाँ पे गलत answer marked है, guys. This is actually a wrong answer. The correct answer is given by 71.43% kids. यहाँ पर गलत answer tag हो रखा है. This is a wrong answer. I'm really sorry. You guys are absolutely correct. Answer is cerebellum. Really sorry about that, बच्चे यहाँ पे गलत आंसर टैग था. रियली सॉरी अबाउट दैट, बट आई एम सो हैप्पी आप लोगों को एटलीस्ट आंसर पता था. सबको समझ आ गया. इट इज योर सेरिबेलम. एंड एज आई वाज ऑलरेडी मेंशनिंग, जो लोग अल्कोहलिक्स होते हैं ना, सो आफ्टर दे गेट हाई दे आर अनेबल टू वॉक स्ट्रेट बिकॉज वो जो अल्कोहल उनके ब्लड में गया है, दैट इज गोइंग टू अफेक्ट देयर सेरिबेलम पार्ट. ठीक है. एंड हैव यू लाइक एवर सीन दोज सर्कस ट्रेनर्स वगैरह जो एक रोप के ऊपर चलते हैं, मेंटेनिंग देयर एंटायर बैलेंस. So their cerebellum is at work उस time. ठीक है बच्चे लोग? The cerebellum is making sure that you walk straight and yeah, ये सारी चीजें. Super. So let's move ahead to the fact number 9 right now. The right side of the brain controls the left side and the left side of the brain controls the right side of the body. So actually this is real. ये real की चीज है. हमारा पूरा brain is divided into two halves. The right hemisphere and the left hemisphere. The right hemisphere controls the left side of your body and your left hemisphere controls the right hand. So if I'm right now moving my right hand, it is under the control of my left wala region. ठीक है बच्चे. And yes, ये भी बोलते हैं जिसका right side ज्यादा developed होता है, they are good in scientific skills, written language, numerical skills. So basically उनका scientific approach होता है. They have a scientific approach towards things. जिनका right side of the body ज़्यादा developed होता है. Right side of the brain, sorry. And left side of the body control जिसका I'm saying मैं उल्टा बोल रही हूँ शायद. Your right brain जिसका ज़्यादा developed होता है, they are more artistic. And जिसका left brain ज़्यादा developed होता है, they are more having the scientific approach. ठीक है बच्चे. सो एक्चुअली में दिस इज रियल. वी हैव डन अ लॉट मनी रिसर्च. बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स ने रिसर्च करा है एंड दिस इज व्हाट वी हैव कम टू नो. ठीक है. सो अगर लेफ्ट ब्रेन ज्यादा डेवलप्ड है देन द पर्सन ऑफ कोर्स विल हैव उनका मैथ्स और साइंस में ज्यादा इंटरेस्ट होगा. बट इफ द लेफ्ट योर राइट ब्रेन इज डेवलप्ड सो उनका आर्टिस्टिक फील्ड में जाएगा. ऑलराइट. चलो जल्दी. विच साइड ऑफ द बॉडी which side of the body does the left side of the brain controls? So आपका left brain controls which side? The left side of the body, the right side of the body, left and right both, या the thyroid? Starting in 3, 2, 1. Come on guys, बस almost खत्म होने वाला है हमारा session. One more fact to go after this. ये तो easy था बहुत. Nice. That's our fastest finger list. बहुत बढ़िया. Yes guys, well done. So I'm super happy आप लोगों को सारे facts पता चल गए. You got to learn a lot many new things about your brain today. So your left side controls the right side of your body. And the last fact number 10 आ गया. So बहुत सारी diseases भी होती हैं. Your brain की बहुत सारी diseases है. For example, Alzheimer's disease, Parkinson's disease, multiple sclerosis. So all these are actually, उनके अंदर what is actually happening is जो आपके brain के अंदर जो nerve cells है ना, they start disintegrating. And do you know, your nerve
cells do not divide. Do you know about this? आपके nerve cells divide नहीं होते हैं. So if इस particular region के all the nerve cells they start disintegrating, nothing can be done. Your brain, basically the person will have a brain disease. So as you can see, पूरे के पूरे brain के picture के ऊपर you can see a lot many flags there, right? So these are different regions पर अगर the nerve cells start becoming less in number, so these diseases will happen. Alzheimer's, multiple sclerosis, Parkinson's, migraine, we have ALS, stroke हो सकता है, Huntington disease, epilepsy, headache, BPPV. So all these are different diseases of your brain. Okay, and yes, these diseases can limit the normal functioning of the human brain. Alzheimer's disease में if you know person, he loses his memory बीच में, he has this short-term memory loss and all. Okay, so that's it. These are the 10 facts, guys. And yes, mental health matters. Mental health matters, guys. So yes, please make sure that you're open about this. Okay, so that's it from my side. आज का session यहीं end करेंगे. Before I leave, let me tell you about how to get yourself enrolled here at Vedantu. And I've just broadcasted a link, बच्चे लोग. I'm pretty sure you guys are already aware with this VIP that we have at Vedantu. So हम यहाँ पर आपको promise कर रहे हैं that there is going to be an improvement in all your subjects. Okay, after you study with us, of course. But still, if you feel dissatisfied, your entire course fee will be returned without any questions asked, right? So this is how confident we are. But इसके लिए एक छोटी सी चीज है that 75% attendance is mandatory. So this VIP is only valid on these long-term courses. But उसमें भी आपको 75% attendance लगानी पड़ेगी. उसी के बाद you can claim that. And also 75% test भी आपको attempt करने पड़ेंगे. Alright guys, so that is it. So if you guys are facing any of these problems here, आपके doubts है, concepts clear नहीं है, ज़्यादा questions और assignments चाहिए, and your syllabus is lagging behind, so you don't have to go any place else. We have a one-stop solution for all your academic worries. यहाँ पर live and interactive courses चल रहे हैं बच्चे, and so you can check out the link that I've just broadcasted. But at the time of buying, do not forget to use my coupon code SNEPL to get an extra 10% discount. ठीक है, आपको 10% का extra discount मिल सकता है after using this coupon code. Alright guys, that is it from my side. ये रहा the leaderboard that you guys have been waiting for. Well done, each one of you. Super, brilliant performance, and I hope you guys enjoyed the session. These amazing facts that we learned today about your brain is going to help you, of course. That's it. Bye-bye, everyone.